ये एक्सीडेंट हुआ था. A girl driving a BMW crashed into my parents' motorcycle, and उसके बाद फॉर सम रीज़न जो मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ. They didn't take us to the nearest hospital. They deliberately took us far away. That's the chilling allegation by a family who lost their loved one in Sunday's BMW horror crash near Delhi's Dhaula Kua. The victim's widow, still recovering with multiple fractures and head injuries, says she begged the BMW driver to rush them to the closest hospital. ये एक्सीडेंट हुआ था. A girl driving a BMW crashed into my parents' motorcycle, and उसके बाद फॉर सम रीज़न जो मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ. देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग हेयर. बट उनको 20 किलोमीटर दूर जो 1 घंटा लगा, उनको न्यू लाइफ करके हॉस्पिटल है GTB नगर में, वहाँ लेके गया. बहुत ही, इट इज़ हॉस्पिटल भी नहीं है, इट इज़ मोर लाइक ए नर्सिंग होम. बहुत ही छोटा सा हॉस्पिटल, एंड दे डोंट हैव एनी फैसिलिटीज़. मेरी मम्मी तो जब मैं पहुंचा मैंने देखा वो लॉबी में ही स्ट्रेचर पे उनको पट्टी वट्टी बांध रहे थे. डोंट इवन हैव प्रॉपर इक्विपमेंट, और पता नहीं क्यों वहाँ लेके गए. एंड ये उन्होंने ही भेजा था जिन्होंने, द वन हु वाज ड्राइविंग द कार. ही वाज, हाँ, वहाँ पे जो पता लगा कि ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड. बट अगेन कि यूजुअली जिन लोगों ने मतलब बात करी है अभी, उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट के इंस्टेंटली बाद डेथ इज़ वेरी रेयर. मतलब यूजुअली थोड़ा टाइम होता है. एंड धौला कुओं के पास तो यू हैव एम्स, यू हैव सुपर स्पेशलिटी, इतने सारे हॉस्पिटल हैं, इतने अच्छे हॉस्पिटल हैं. वहाँ ले जाते तो शायद बच जाते. But instead, they were taken into a small facility in GTB Nagar, miles away. The fatal accident unfolded when a speeding blue BMW rammed into the couple's motorcycle from behind. The impact threw both riders onto the road. The husband, a finance ministry employee and a resident of Harinagar, suffered severe head and facial injuries. His wife was left bleeding with broken bones and 14 stitches on her head. According to her testimony, the BMW was being driven recklessly by a woman who identified herself as Gaganpreet Kaur. The car even overturned after the crash. Moments later, the victims were placed into another vehicle and driven not to the nearest trauma center but to far off small hospital where they were reportedly left waiting on stretchers. The woman survivor says her husband might have stood a chance if immediate medical aid had been given. 14 तारीख को 2 बजे के आसपास एक मेडिको लीगल केस यहाँ पे लाया गया रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ, जिसमें कि एक कार और एक मोटर बाइक के बारे में हमें बताया गया. इसके बाद हमने फर्स्ट एड ऑफर किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया. लगभग 50 से 55 वर्ष की आयु का एक मैन ब्रॉड डेड लाया गया था यहाँ पर. Instead, her pleas went unheard. By the time family members arrived, he had already lost his battle. She was later shifted to Venkateshwar Hospital. Delhi police have now registered FIR under sections 281, 125B, 105 and 238 of the Bharatiya Nyaya Sanhita. The accused, Gaganpreet Kaur, was taken into custody after being discharged from hospital. Eyewitnesses confirmed that a woman was at the wheel when the BMW crashed into the two-wheeler, which then hit a bus on its left. The crash has reignited debate over rash driving and VIP immunity on Delhi's roads. For the victim's grieving family, though this is not just about reckless driving, it's about a crucial golden hour lost. Their demand is simple: accountability and justice for a life cut short.